Namaskar and a very good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the inaugural session on day 2 of the International Museum Expo, which is being brought to you by the Museums Division of the Ministry of Culture, Government of India. Ladies and gentlemen, I'd like to now extend a very warm and hearty welcome and also invite on the dais our esteemed ministers. Please join me in welcoming Honorable Minister for Culture, Tourism and the Development of the Northeast Region, Government of India, Shri G. Kishan Reddy Ji. Sir, if I may request you to kindly join us on stage. Please join me in welcoming Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture, Government of India, Shri Arjun Ram Meghwal Ji. Honorable Minister of State for External Affairs and Culture, Government of India, Ms. Meenakshi Lekhi Ji. We are also very pleased to have Honorable Ministers who are presenting different states of India to share their perspectives for the development of museums in their respective states. May I also stage Admiral D.K. Joshi, Honorable Lieutenant General of Nicobar Islands. Shri Paul Lingdo, Minister of Arts and Culture Department, Social Welfare Department, Textiles Department and Tourism Department, Government of Meghalaya. Srimati Zahida Khan, Honorable Minister of Rajasthan, State, Science and Technology, Independent Charge, Printing and Stationery, Education, Primary and Secondary Arts, Literature and Culture. May I also invite Shri Ashok Chandra, Science and Technology, Public Enterprises, Social Security and Empowerment of Persons with Disability from the Government of Orissa. Shri S. Lakshmi Narayan, Honorable Minister of Tourism from Puducherry. Shri Keshav Mohantaji, Honorable Minister of Science and Technology and Climate Change, Government of Assam. And Shri S. Chandrira Priyanka, Honorable Minister of Art and Culture, Transport, Ajit Pravidar, Welfare, Transport, Housing, Labour and Employment Economics and Statistics, again from the Government of Puducherry. Ladies and gentlemen, requesting you all to please give a very hearty round of applause as a welcome gesture to our Honorable Ministers. May I now request our Honorable Minister, Shri G. Kishan Reddy Ji, to kindly light the ceremonial lamp, and I request all other esteemed Honorable Ministers present on the dais to kindly join in the lighting of the ceremonial lamp. The lamp lighting is an integral part of our Indian tradition, done to commemorate new and auspicious beginnings with a prayer and invocation to the divine. Honorable Ministers for the lighting of the ceremonial lamp. Just like the lighting of the lamp, we also have a tradition of welcoming our guests, Atithi Deva Bhava, a very integral part of the Indian tradition. And now we would like to do the formal welcome of our Honorable Ministers. And may I please request Ms. Mukta Sinha Ji, Museums, Ministry of Culture, to please come on stage and formally welcome our Honorable Ministers, starting with our Honorable Minister, Shri G. Kishan Reddy Ji. Still there,
And I request our esteemed members of the audience to please give a rousing applause as we welcome our honorable ministers. Ma'am, may I request you to kindly welcome Shri Arjun Honorable. Thank you. Assam and from Odisha. Sir, if I may request Shri Keshav Mahanta ji on the नीचे आ जाओ, राम को बोल दो राम को इधर बुला लो, मैं कैमरा दे देता हूँ। आप देख लीजिए आपको The traditional welcome with the Ministerial is a mark of हम साइन का Sir, if I may request you to वो तो kindly एकदम हो जाएगा, मेरे को नीचे आऊँगा तो निकल जाएगा वो, तो मैं नीचे आ जाता हूँ। जी मैं जब तक आऊँगा हो जाएगा उसमें। मैं नीचे आ जाता हूँ। Thank you, Honorable Minister. And with this, I will request our Honorable Minister, Shri G. Kishan Reddy ji, to kindly deliver his welcome address. Good morning, सबको नमस्कार। मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे साथी और लॉ एंड जस्टिस, पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स of External Affairs, Minister of Culture and Voice, Srimati Meenakshi Lekhi ji, राज्यों से आए हुए हाँ सर, सम्मानित हाँ जी मंत्रीगण, अन्य सभी ठीक है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं केंद्र सरकार के ओर से म्यूजियम एक्सपो 2023 में जो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा, उनके विजन के द्वारा कल जो प्रारंभ हुआ है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को स्वागत भी करता हूं। मुझे ये बताते हुए खुशी है, आजाद के बाद पहली बार इतने बड़े लेवल पर इस इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का योजना हुआ है। जहाँ तक मेरा जानकारी है, विश्व के किसी भी देश में ऐसा म्यूजियम एक्सपो
नहीं हुआ है। कि पहली बार भारत में ट्राइबल से लेके, एजुकेशन से लेके, साइंस से लेके, डिफेंस से लेके, लिटरेचर से लेके, म्यूजिक से लेके, सभी तरह म्यूजियम्स का से आज इस एक्सपो का आयोजन किया है। हमारे लिए गर्व की बात है, इस म्यूजियम एक्सपो 2023 के उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसके नेतृत्व में पिछले 9 सालों में हमने म्यूजियम्स को मॉडर्नाइज किया है और मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ देश अपनी देश का हेरिटेज का भी हम स्वयं देख रहे हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व देश ने अनेक वर्ष के बाद अपने कल्चरल रीजेनरेशन को इंटरनेशनल लेवल पर हम अभी देख सकते हैं। म्यूजियम्स को भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करना है। म्यूजियम एक्सपो 2023 के सेशन वेरियस टॉपिक्स पर और सब टॉपिक्स पर कल से शुरुआत हुआ है। इस म्यूजियम के दृष्टिकोण से दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स आज इस 3 दिन का एक्सपो में भाग ले रहे हैं। उसमें म्यूजियम आर्किटेक्चर में है, म्यूजियम लाइटिंग्स, एक म्यूजियम का प्रदर्शन का आयोजित करना, एस्टैब्लिश करना, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज करना, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी आधार पर भारत भी आगे आना हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। हम चैलेंज को स्वीकार किया है। भारत अब किसी से कम नहीं है। दुनिया के साथ जितने भी मॉडर्न म्यूजियम्स है, उससे ज्यादा अच्छा म्यूजियम आने वाले दिन में अभी भी भारत की योजना हो रही है। तो मेटावर्स म्यूजियम्स हो, साइंटिफिक कलेक्शन इन म्यूजियम हो, डिजिटल मार्केटिंग का म्यूजियम हो, विश्व के वेरियस एक्सपर्ट्स द्वारा मास्टर क्लासेस का भी आयोजित हुआ है। इसके अलावा फिजिकल एग्जीबिशंस, टेक्नोमेला, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम आज हम पीछे देख सकते हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सहिबिशन और वर्कशॉप, एक्सहिबिशन किट के साथ वर्कशॉप भी हो रही है। इंटरनेशनल एक्सपो में भारत और दुनिया भर के 75 म्यूजियम को आज इधर प्रदर्शित करने वाली एक पैनल डिस्कशन भी हो रही है, जिनमें विलेज और कम्युनिटी बेस्ड म्यूजियम्स है और वर्कशॉप और म्यूजियम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी केस स्टडी इस 3 दिन के म्यूजियम में आयोजित किया गया। म्यूजियम के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट और म्यूजियम से संबंधित रिसर्च एंड स्टोरी टेलिंग की कला को बढ़ावा देने के लिए श्री जैसे स्कीम्स और मिनिस्ट्री कल्चर के द्वारा ऑपरेटेड म्यूजियम ग्रांट स्कीम पर राउंड टेबल डिस्कशन भी आयोजित किया गया और इसमें आजादी अमृत महोत्सव थीम पर आधारित इस 75 मेन आर्ट वर्क्स को इस एक्सपो में शोकेस किया गया है। फ्रेंड्स, आज भारत में लगभग
500 से अधिक म्यूजियम्स है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का म्यूजियम्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग अलग मिनिस्ट्रीज का, रेलवे से लेके ट्राइबल से लेके अलग अलग मिनिस्ट्री का भी म्यूजियम्स है और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी म्यूजियम्स है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अच्छे म्यूजियम्स भी चला रहे हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी म्यूजियम्स है। यूनिवर्सिटी लेवल का भी इधर जो प्रदर्शन किया गया, यूनिवर्सिटी लेवल का भी म्यूजियम्स है। देश भर में एक म्यूजियम इधर भी है। और इसके साथ साथ जो इसमें जो रुचि रखते हैं, एक कमिटमेंट के साथ बहुत लोग देश में प्राइवेट म्यूजियम्स भी चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए, हमारा विरासत के लिए, हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी लेने के बाद लगभग मैं कल भी बताया था 145 म्यूजियम्स का, नया म्यूजियम का भारत सरकार के द्वारा इस 8.5 years में एस्टैब्लिश किया गया। और कल प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए। कितना म्यूजियम है, एक एक म्यूजियम में क्या इंपॉर्टेंस है, और कोई म्यूजियम्स देखना चाहते तो किधर जाना चाहिए, वेबसाइट में भी ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी दृष्टिकोण से कल्चर मिनिस्ट्री एक आयोजन किया है। म्यूजियम का देश भर का, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, मिनिस्ट्री हो, सबका एक डाटाबेस एक बुक के रूप में लाना चाहिए, ऐसा निर्णय करके कल उस बुक का उद्घाटन, डाटाबेस का बुक का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोग के द्वारा और प्रदर्शन किया गया। वही आने वाले दिनों उसको अच्छे वेबसाइट में भी इस पूरा म्यूजियम्स का कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा देश के सामने हम जो भी किसी तरह म्यूजियम देखना चाहते तो मालूम होना चाहिए किधर है, वो डाटा भी आज देश के सामने आएगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्राइवेट म्यूजियम्स भी और गवर्नमेंट म्यूजियम्स भी और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री म्यूजियम्स का भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार के द्वारा हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ म्यूजियम्स को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंस करते हैं। उसमें 50 म्यूजियम्स को अपग्रेडेशन के दृष्टिकोण से भारत सरकार कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा म्यूजियम के लिए हम शुरुआत किया है। और ASI का, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का लगभग 51 म्यूजियम हमारे कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा भी वो भी चलाते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम में जो भी सेनानी थे, देश के आजाद के लिए संघर्ष किया, ऐसे महान कौम का नाम पर भी म्यूजियम से एस्टैब्लिश किए गए। वैसे ही कुछ अनसंग हीरोज भी है। आजाद का 75 इयर्स का जो आजाद का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस दृष्टिकोण से देश के आजाद के लिए जो संघर्ष किया है, जो अनसंग हीरोज है, उनका बारे में, जो बलिदान के बारे में, उनके जीवन के बारे में आज का नया नौजवानों को, नया पीढ़ी को, आने वाला पीढ़ी को एक उसको प्रिजर्व करना, प्रदर्शित करना, इसके लिए भी नए नए म्यूजियम्स का भी देश भर में आयोजित किया जा रहा है। और स्पेशली हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान हमारे आदिवासी वीरों का है, मगर जितना उनका पहचान होना चाहिए, जितना रिकॉग्निशन और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए होना चाहिए, वो नहीं था। इसी दृष्टिकोण से हम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का म्यूजियम्स भी हम आयोजित कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा का म्यूजियम प्रधानमंत्री जी का आदेश पर झारखंड स्टेट राज्य ने
हम आयोजित किया है, उसका उद्घाटन भी हुआ है, प्रधानमंत्री जी को भी उद्घाटन किया है। वैसे ही अभी हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक 10 ट्राइबल म्यूजियम्स के लिए भी निर्णय किया है। काम तेजी गति से काम चल रहे हैं, उसमें झारखंड, आंध्र प्रदेश, अलग अलग स्टेट 10 म्यूजियम्स एट ए टाइम भारत सरकार ने ट्राइबल म्यूजियम के लिए भी सैंक्शन किया गया। वैसे ही और प्रधानमंत्री म्यूजियम आप सब लोग देखे होंगे, ज्यादा लोग तो स्टेट ऑफ आर्ट के नाते इंटरनेशनल लेवल पर जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से अच्छे एक प्रधानमंत्री संग्रहालय प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का भी उद्घाटन हुआ है। जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक 14 प्राइम मिनिस्टर का पूरा योगदान, भारत के लिए योगदान, क्या क्या समस्या थे, एक स्कूल का स्टूडेंट्स जो उस म्यूजियम में जाते हैं, लास्ट वापस आते हैं, देश का पूरा हिस्ट्री, प्रधानमंत्री का जितने भी देश के लिए काम किए हैं, सबका जीवन का एक काम हम देख सकते हैं। वैसे ही कलकत्ता में विप्लव गैलरी म्यूजियम, इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूजियम, दी रेड फोर्ट म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम, और कल भी हम बता चुके हैं नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का म्यूजियम का भी निर्माण होने का एक एक्शन प्लान कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक दुनिया भर में सभी लोगों का एक्सपर्टीज जो ही है उसमें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक म्यूजियम में लाने के लिए प्रयास कर रही है। हमारा उद्देश्य है म्यूजियम से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स, प्रोफेशनल्स, वेरियस म्यूजियम एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज और सभी लोगों को, केंद्र सरकार में जितने भी मिनिस्ट्रीज है उनको भी एक मंच लाया जाए ताकि एक मीनिंगफुल, एक सार्थक चिंतन मंथन हो और अपने आप देश के सभी म्यूजियम को और अधिक अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके, उसका निर्माण हो सके, उसका प्रदर्शन हो सके। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, अधिक से अधिक लोग अपने बिजी शेड्यूल में कुछ समय निकालकर इस म्यूजियम एक्सपो आना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके हमारा कल्चर मिनिस्ट्री के अधिकारी सभी म्यूजियम्स का, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत हमारा आशीर्वाद दिया था, बहुत अच्छा काम हुआ। मैं भी फिर भी मेरा तरफ से भी सभी हमारे कल्चर मिनिस्ट्री के अधिकारियों को ये अच्छे म्यूजियम पहली बार एक विजन के साथ एस्टैब्लिश किया है, मैं मेरा तरफ से भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, कल शाम तक ये म्यूजियम है, आके देखिए। मैं खासकर जितने भी म्यूजियम दृष्टिकोण से रुचि रखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो सब जरूर आना चाहिए, इसको देखना चाहिए। हम भी ऐसी लगभग 200 डेलीगेट्स को भारत सरकार के द्वारा हम भी आमंत्रित किया है। मैं ऐसी ही गौरवशाली इतिहास है, इसमें संस्कृति है, कला है, विज्ञान है और विरासत है। इसमें एक जगह आप देख सकते हैं। एक और मैं अपील करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें अलग अलग म्यूजियम्स को देखने का मोटिवेट करना चाहिए। मैं सभी स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को, प्रधान मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखने वाला हूँ। अपने अपने प्रांत में जितने भी म्यूजियम्स है, एक स्टूडेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए, हर स्टूडेंट हर स्टेट में किसी एक म्यूजियम को जरूर विजिट करना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सभी इस मंच से सभी स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी एजुकेशन मिनिस्टर्स को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रयास करिए,
सभी स्टूडेंट्स को म्यूजियम्स को दिखाना, जितना ज्यादा से ज्यादा जितना म्यूजियम दिखना चाहिए। कम से कम एक म्यूजियम जरूर हर स्टूडेंट मिनिमम उनको दिखाने का प्रयास करना चाहिए। और फिर एक बात, जो इस म्यूजियम में अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से इस प्रदर्शन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि इतने नाजुक रहते हैं कुछ आइटम्स, फिर भी बहुत मेहनत करके वो लोग दिल्ली में इस हिस्टोरिक प्रगति मैदान में प्रदर्शन करने के लिए लाए हैं। और एक्सपर्ट्स भी आए हैं, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपर्ट्स भी आए हैं। और बहुत सालों से इसी म्यूजियम में मन धन श्रम के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ जो म्यूजियम में काम करते हैं, उनको भी भारत सरकार के द्वारा मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। आपने देश की विरासत के संरक्षण के लिए म्यूजियम्स का अमूल्य महत्व के बारे में बताया। Thank you, Honorable Minister, for sharing such deep insights through your address and stressing on the irrepressible contribution of museums in the preservation and conservation of the country's history. Ladies and gentlemen, we are very pleased to welcome our honorable ministers who have joined us representing various states of the country. And may I request our honorable minister, Shri G. Kishan Reddy ji, to kindly welcome them. Sir, if I may request you to kindly welcome Shri Paul Lingdo, honorable minister from Meghalaya. Honorable Minister, to kindly welcome Ms. Chandira Priyanka, Honorable Minister from Puducherry. May I now request you to kindly welcome Sri K. Lakshmi Narayan, Honorable Minister from Puducherry. And may I now, sir, request you to kindly welcome Ms. Zahida Khan, Honorable Minister from the state of Rajasthan. Honorable Minister, Ms. Meenakshi Lekhi ji, is welcoming Ms. Zahida Khan, Honorable Minister from Rajasthan. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now have the inauguration of the pictorial bibliography on museums, and may I please request Honorable Minister Shri G. Kishan Reddy ji to kindly inaugurate the pictorial bibliography on museums. Ladies and gentlemen, the pictorial bibliography on museums, the unveiling by Honorable Minister and all our respected and esteemed ministers present with us on dais. Also joining us is Mukta Sinaji, Joint Secretary, Museums from the Ministry of Culture.
Thank you, Honorable Minister. Ladies and gentlemen, we now have the launch of the Indian Museum's Tycoon Game. And once again, I will request our Honorable Minister Shri G. Kishan Reddy ji to kindly inaugurate it through the pressing of button. The Indian Museum's Tycoon Game. Unique one of its kind initiative. Thank you, Honorable Minister. May I now invite our Honorable Minister, Ms. Meenakshi Lekhi ji, to kindly introduce us and talk about the cultural spaces development in the 5 cities with us. Thank you very much, Honorable Minister of Culture, Shri G. Kishan Reddy ji, my friend, colleague in the Cabinet, Shri Arjun Ram Mejwal ji, Minister of Culture and Parliamentary Affairs, Samantha from Assam, the Culture Minister, Chandrika ji, the Minister from Tamil Nadu, Culture Minister again, Mr. Panda, Zaida ji, Paul, and Lakshmi Narayan ji, and our very progressive, hardworking Joint Secretary, Gupta ji. Ladies and gentlemen, pleasure and honor to be here. I must say that when we are talking about cultural spaces, museums cannot be warehouses, and thus museums necessarily have to be involved with public, people, presentation, interaction, and this is what a cultural space can be converted, where performances of all kinds happen simultaneously. And today, Government of India has chosen to pick up 5 cities to begin with, and I'm sure this will have a replicating and ripple effect, and several other cities will come forward. We must say that when Delhi got chosen and selected for this specific purpose, being the capital city, Calcutta, Mumbai, Ahmedabad and Varanasi is where we are starting or beginning our project of creating cultural spaces in the city, because people need to step out, get going, work, and more technology usage for getting people to the spaces. If I can take everyone of you back to the times of COVID, when internet was the only friend we had, did that satisfy our curiosity, or did that make our life better? That was an alternative to the personal interaction which human beings seek, but it can never replace the interaction which human beings need to have for their personal growth and development. I remember how everyone wanted to step out, how lockdown was an issue, and we used internet only to deal with that lonesome period. But in the heart of heart, everyone wanted to get out, go out, meet people, interact with things and people, and being cooped up in a room or at home is not good enough for a person's personal development or existence for that matter, and satisfaction, of course, is not there.
keeping that in mind and understanding how lighting, how security, how presentation, we can as yet use technology to achieve those purposes. So a right mix of technology in terms of presentation, but nevertheless interactive action is what is needed. And I was just thinking of a term which is used by economists, which is called the Bilbao effect. And that is about a place and space in Spain, a nondescript city, Bilbao, and was a shipping industry at one time, steel manufacturing at another time, and gradually it lost its relevance. And when it lost its relevance, people of the city and the government decided to spend about 100 million euros to build a museum. Around that museum, tourism, all kinds of activities, food, restaurants, walkways, technological initiatives, everything started. The whole city became a beautiful city and a touristic destination, which probably brought 400 euros per day, 4,000 euros per day, and 4 million euros per day per year. And that's the kind of earning from 100 million to 400 per day. Is the kind of earning this churned the economy around. And this churning of economy is what we all need to understand. You make these cultural spaces, it not only has the impact on knowledge, information, pride and creativity, but also has impact on economy. And yesterday, Honorable Prime Minister Modi ji, relevant statement for all of us, consumption of all of us, and that statement was that no economy and no country can get ahead and become an economic power until and unless you invest in your cultural power. So culture is necessary for all of us to seek pride in, to have information and knowledge, and in those terms India has had such a rich cultural history. I'm so proud of my department that they have arranged this cultural mix of Museum Expo on International Museum Day to bring all the stakeholders together to think about museums, to think about cultural economy, to think about knowledge sharing and the impact on people's well-being, and that's what this Museum Expo is all about. I see more and more attention that let's get performing art, let's get literary art, let's get everything that is related to the human well-being or evolution of mankind together and bring museums together. This is just a show to indicate that whether it's defense or it's science or it's cultural art forms or it's sculptures or it's ways to creativity, India has so much to offer and we need to preserve and conserve. I'm very, very happy that 5 cities will be signing the MOUs and we will continue to build on the cultural spaces that we all seek for our well-being. One piece of information is that in 2016 there was a study which studied how much of information, especially historical information, is available on the internet, and it was found that 46% was either incorrect or inaccurate. Now, if that becomes a source of learning, we can understand the impact it will have on the young people's mind. So more and more young people have to visit museums to know the right history, the right perspective, and get connected to what the truth and reality is, and not just live in a virtual world. And usage of science and technology to have better presentation and interactive presentation is all very well, but all the information and knowledge available may not necessarily be always the correct form, and that's today. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Honorable Minister.
Minister, for your extremely noteworthy address and for sharing such a powerful message with us, the cultural power, great matter of pride. I think that's something that we'll all take with us from here. Ladies and gentlemen, we now have the MOU signing for the 5 cultural spaces. In his speech at the Old Currency Building in Kolkata on 11th January 2020, the Honorable PM announced the development of cultural spaces in 5 cities in India, namely Kolkata, Delhi, Mumbai, Ahmedabad and Varanasi. These MOUs are now signed to take forward our Honorable PM's vision and also build cultural spaces that will enable societal engagement through visual, performing and literary arts and the indigenous knowledge systems. I request our Honorable Ministers to kindly remain seated for the MOU signing ceremony. And now I am going to invite our dignitaries state-wise. May I request Ms. Mukta Sinha ji to please join in. Firstly, from Ahmedabad, I would like to invite Shri K.S. Vasava, Joint Secretary Sports, Youth and Cultural Activities, Shri C.R. Kharsan, Deputy Municipal Commissioner from the Ahmedabad Municipal Corporation, Shri Jagdish Patel, Chief General Manager Technology from the Sabarmati Riverfront Development Corporation Limited. Representing Ahmedabad from the city of Gujarat, and we will have the MOU signing ceremony. We now call our representatives from Varanasi, Shri Amarnath Upadhyay, Special Secretary, the Department of Culture, Shri Abhishek Goyal, Vice Chairman of the Varanasi Development Authority, May I request our representatives from Ahmedabad to please come on stage.
exchange the MOUs on stage in the presence of the Minister. This was the MOU exchange for the city of Ahmedabad. May I now invite representatives from Varanasi, Shri Amarnath Upadhyay, Special Secretary in the Department of Culture, and Shri Abhishek Goyal, Vice Chairman from the Varanasi Development Authority. तैयार रखो ना ऐसे खड़े होना तो उसी टाइम शुरू पड़ेगा May I request them to please join us on stage for the MOU exchange in the presence of Honorable Minister and other esteemed Honorable Ministers on the dais. And meanwhile, I'll call Director National Modern Art Mumbai, and Shri Umesh Kumar, Director from the Nehru Science Center Mumbai, to come forward for the signing of the MOU. We now have the signing of the MOU for the city of Mumbai. May I now request them to please join us on stage for the exchange in the presence of Honorable Minister and our other esteemed Honorable Ministers on the dais. And meanwhile, I request our esteemed members in the audience to kindly keep the flow going with your applause. These are indeed historic moments. Meanwhile, if I may call Shri Samarendra Kumar, Secretary and Curator from the Victoria Memorial Hall, representing the city of Kolkata, to please come forward for the signing of the MOU. Shri Samarendra
Ravindra Kumar, Secretary and Curator of the Victoria Memorial Hall, presenting the City of Kolkata. Jay. And now we request them to once again join us on stage for the MOU exchange. And while that is being done, may I request Gurmeet Chawla, Additional Director General from the Archaeological Survey of India, representing Delhi, to please come forward for the signing of the MOU. Gurmeet Chawla, Additional Director General from ASI, to please come forward. And once the Delhi MOU has been signed and exchanged, we will request all the representatives from the 5 different cities who have today signed and exchanged the MOUs to finally come on stage for a group photograph. So the MOU exchange for Delhi to happen in the presence of our Honorable Minister. If I may at this stage request our other representatives from the rest of the 4 cities to please come on stage for a group photograph. चलते हुए हिल रहा था ना, ये हिल रहा था इससे थोड़ा लाइव पे ऐप हो जाता है। इस पर देखो हिला, अभी चल रहा ना ये। Let's have a big round of applause for this historic MOU signing and exchange. Thank you to all representatives from the 5 cities. Ladies and gentlemen, it's that moment we have all been eagerly waiting for. The dialogue with various ministers representing their respective states on Vision 2047 for museums in the state. I will request our honorable ministers to kindly take forward, carry forward this dialogue. Firstly, I will request our honorable minister, Shri G. Kishan Reddy ji, to carry the dialogue with the respective ministers representing their respective states.
मैं असम से हमारे मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं, केशव महांता जी 2 मिनट असम में म्यूजियम के बारे में बताएं, उसके बारे में उनसे प्रश्न पूछेंगे। Honorable Minister of Culture, Tourism, Education Reddy ji, Honorable Minister Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Minister Meenakshi Lekhi ji, Minister for Culture, और मेरा colleague of different state, Shri Ashok Chandra Panda ji, Science and Technology Minister from Odisha, then S. Sandhya Priyanka, Minister from Pondicherry, Jaheda Khan, Minister from Rajasthan, and Paul Lindu from Meghalaya, Yen Lasmi Narayan ji, और पदाधिकारी Culture and Tourism Ministry और स्टेट का जो पदाधिकारी लोग हैं, सबको लिए मेरा बधाई है, सबको लिए नमस्कार। It gives me immense pleasure to be present here today. Organized by the Council for As we all know, the theme of this year for the International Council on Museums is Museum Sustainability and Well-being. I am hopeful that this Museum Expo will initiate a historic address to the various issues relating to museum, its sustainability and well-being. I am presenting today, in my presentation today, I would try to showcase the status of museums in the state of Assam and our in the next year. In Assam, we have museum under the director of museum under the Department of Cultural Affairs, and on the other hand, we have District Science Center and Planetarium under the Department of Science and Technology and Climate Change. It is from Government of India, the Cultural of and National Council of Science Media. Now, the Assam State Museum under the Director of Museum is one of
the premier institute of the state and a rich repository of 14,000 timeless artifacts and outstanding historic and cultural significance. And our vision, the museum was established with a vision to enrich the highlight of our rivers and the significant cultural life. Next. Regional Science Center, Guwahati. This is the museum, the mobile science exhibition and the innovation hub of 3D sciences source. The Regional Science Center Kanapura focus on the developed science attitude and the temper and to create. This is from Government of India, Department of Ministry of Culture, and this is under the National Council of India. Science Center. We have 35 districts. Out of 35 districts, in 23 districts, we now planning to establish the 23 center museum and planetarium. Now we have 5. Actually, 5 is ongoing. Functional, Guwahati Planetarium, Jorhat Science Center, Kokrajhar Science Center, Nalbari Science Center, and the Lakhimpur Science Center. This 5 is functioning. Under 17 completed within a year. एक साल का अंदर हम लोग ये कंप्लीट करूंगा और इसके बारे में भी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का अंदर से एक साइंस सिटी बन रहा है गुवाहाटी में। इसीलिए ये अभी प्लानिंग है, ये 17 कंप्लीट हो जाएगा। इसका बाद हम लोग का 23 डिस्ट्रिक्ट में साइंस का म्यूजियम, साइंस का ये होगा। Another one is Science City of Guwahati or Science City of Assam. This is our now planning and ongoing and existing plan of the museum and science museum and science district science center and actually thanks to grateful to the Honorable Minister because now today actually we present here in our एक ऑडियंस के तरफ से मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्लैरिफिकेशन। किसी प्रकार असम गवर्नमेंट ने एकेडमिक एंड कल्चरल स्पेसेस में म्यूजियम प्रायोरिटी देने के लिए योजना आपके सरकार के द्वारा है, उसका कोई जवाब दे सकते हैं? एक्चुअली ये असम में म्यूजियम एक डायरेक्टर ऑफ म्यूजियम से होता है, एक डायरेक्टर ऑफ कल्चरल से होता है, एक डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजी से भी होता है और सारा बाकी साइंस म्यूजियम का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से होता है। अभी हम लोग का आप जो प्रयास किया, हम लोग एक स्कीम लिया होगा मुख्यमंत्री
विज्ञान दर्शन। ये स्कीम में हम लोग सारा स्टूडेंट को लेके म्यूजियम दर्शन करता है। ये आपका स्पीच में सुना है, ये प्लानिंग हम लोग असम में किया और म्यूजियम दर्शन के लिए ऐसे प्लानिंग हम लोग विज्ञान दर्शन बोल के, म्यूजियम भी होता है, साइंस भी होता है। और जो आप प्रयास किया वो मैं मेरा सीएम के साथ भी बात करूंगा। वो निश्चय ये प्रपोजल हम लोग का हाथ में अभी प्लानिंग नहीं है, लेकिन हम लोग आपका प्रयास पूर्ण करेंगे। माता जी, और क्लैरिफिकेशन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, आने वाले 25 साल देश के पीछे से आने वाले 25 साल एक अमृत काल के नाम जो 2047 जो 100 ईयर सेलिब्रेशन होगा, हमारे लिए अमृत काल है। इस दृष्टिकोण से म्यूजियम डेवलपमेंट के लिए आने वाले इस 25 साल में असम का प्रयासों को हम किसी तरह हम देखना चाहिए। आपका मन में क्या है, आपका सरकार का क्या रोड मैप है? अभी असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बहुत कुछ चेंज हुआ और प्रधानमंत्री का जो प्रयास, ये 25 साल हमारा पास है अमृत काल का प्लानिंग करने के लिए हम लोग सब डिपार्टमेंट को अलग अलग ने दिया है। वो ये म्यूजियम भी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जो भी हो, सब लोग का ये अमृत काल में 25 इयर्स का प्लानिंग क्या होगा वो हमारा पास बन रहे हैं। आपका जो प्रयास, हम वही डिपार्टमेंट को बोलूंगा तो सीएम ये आज का आपका आह्वान है, ये हम लोग इम्प्रूव करें। थैंक यू। आपको केंद्र सरकार से अलग अलग इंस्टीट्यूशन से असम में म्यूजियम से विकास के लिए आने वाले 25 साल का एक बढ़िया एक्शन प्लान बनाकर इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपका जो है हम लोग जल्दी प्रपोजल आपको पास हो सकेंगे। थैंक यू। Thank you, Honorable Minister. May I now request Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Minister, to kindly say a few words and initiate the question answers. International Museum Expo 2023 के अवसर पर उपस्थित हमारे जी कृष्ण रेड्डी साहब, माननीय पर्यटन, संस्कृति एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री भारत सरकार, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, माननीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार, श्रीमान अशोक चंद्र पांडा जी, माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक इंटरप्राइजेज, सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मंत्री उड़ीसा सरकार, केशव महंता जी, माननीय साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज मंत्री असम सरकार, श्रीमती चंद्रा प्रियंका, माननीय आर्ट एंड कल्चर, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर, हाउसिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स मंत्री पांडिचेरी सरकार, श्री लक्ष्मी नारायण जी, माननीय पब्लिक वर्क्स, टूरिज्म, सिविल एविएशन मंत्री पांडिचेरी सरकार, श्री पॉल लिंगडो, माननीय कला और संस्कृति मंत्री मेघालय सरकार, श्रीमती जाहिदा खान, माननीय मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्वतंत्र प्रभार, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्वतंत्र प्रभार, शिक्षा, आर्ट, लिटरेचर, संस्कृति और एएसआई राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। इस अवसर पर उपस्थित संस्कृति मंत्रालय की हमारी जॉइंट सेक्रेटरी मैडम मुग्धा सिन्हा जी, आप अलग अलग प्रदेशों से आए हुए सभी अधिकारी, सभी म्यूजियम के काम में जुड़े हुए सभी एनजीओ के लोग, प्राइवेट जो म्यूजियम संचालित करने वाले भी सभी हमारे साथी और पत्रकार साथी। देखिए, मैं ज्यादा लंबा बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं सोच रहा हूं कि इस 3 दिवसीय वर्कशॉप से
हम क्या की टेक अवेज, घर क्या ले जा सकते हैं और हम ले जा करके क्या काम करें आगे। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, आसाम के मंत्री जी से पूछ रहे थे जी किशन रेड्डी जी कि आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, 75 सालों में देश कैसे चला, कहां तक पहुंचा, इसका हमने विश्लेषण किया। लेकिन हम 2047 तक कैसे चलेंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उसके लिए हमारा रोड मैप क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सबके बीच में खड़ा। इसलिए मैं याद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के कल के भाषण को। तो एक हमारा की टेक अवे में हो सकता है कि हम घर को म्यूजियम बनाएं। अब घर में सामान सपोर्ट करो, घर में हमारे दादाजी या दादी, नाना नानी जी के कुछ सामान है ऐसा म्यूजियम में रखने लायक, उसको एक बार घर के कोने में सजाने का प्रयास करें। हम सजाएंगे तो हमारा पड़ोसी भी करेगा, पड़ोसी करे तो हमारे मोहल्ले का आदमी भी करेगा, तो उस गांव में म्यूजियम में रखने वाला सामान इकट्ठा हो सकता है। और कोई जुनूनी लड़का तैयार हो उस गांव में तो इकट्ठा करके किसी जगह सिटी में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, पंचायत हेडक्वार्टर पे कहीं जमा करा करके म्यूजियम का भाव विकसित कर सकता है नागरिकों को। ये हमारा की टेक अवे एक प्रोग्राम जैसा होना चाहिए। घर क्या ले जाए, घर को म्यूजियम बनावे, घर में म्यूजियम का वातावरण पैदा करें, कुछ पुराना सामान है इसको इकट्ठा करें। हो सकता है कोई पांडुलिपि पड़ी हो, कोई किताब पड़ी हो पुरानी जिसमें फट रही हो, उसको मैनेजमेंट मिशन कैसे उसको ठीक करे, वहां चिंता करे, तो ऐसा कोई लड़का गांव में तैयार करे, फिर समाज में 8-10 लड़के तैयार करें। तो ऐसे करते करते एक म्यूजियम की भावना विकसित होगी समाज में भी, और देश में म्यूजियम बने, ऐसा विकास हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी स्वामी विवेकानंद खेतड़ी गई, लेकिन खेतड़ी में म्यूजियम बनेगा इसका कोई विचार नहीं आया। लेकिन एक साधु रामकृष्ण परमहंस मिशन से खेतड़ी पहुंचा और उसने अपना पूरा जीवन दे दिया खेतड़ी में, और उसने एक जुनून बना लिया कि मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद और जो महाराजा अजीत सिंह है जिसके कारण स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, वहां हम एक म्यूजियम बनाए। अब वहां कौन म्यूजियम बनाए, कौन पैसा दे, तो फिर उसके दिमाग में आया कि राजस्थान सरकार क्या कुछ कर सकती है, क्या भारत सरकार कुछ कर सकती है, क्या राजस्थान सरकार की मंत्री जाहिदा खान बैठी है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार में मिलकर अजीत विवेक म्यूजियम। अब कल्पना तो उसने 20 साल पहले की थी एक साधु ने, लेकिन खेतड़ी में एक शानदार अजीत विवेक म्यूजियम बन गया। उसमें संस्कृति मंत्रालय का भी सहयोग है, राजस्थान सरकार का भी सहयोग है। अब फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, केंद्र का भी सहयोग लीजिए, राज्य भी सहयोग करे, और शानदार म्यूजियम बन गया। कितने लोग देखते हैं, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी। स्वामी विवेकानंद ने भाषण किया था शिकागो में, वो भी आ गया। स्वामी विवेकानंद को अलवर में कौन सा महाराजा मिला, क्या कहा, वो भी आ गया। सारी चीजें आ गई। महेंद्र खड़गपुर जी बैठे, ये देख के आए होंगे, आप देख के आए क्या महेंद्र जी? इतना शानदार म्यूजियम बन गया। तो ये हमारा की टेक अवे कार्यक्रम में आना चाहिए कि हम घर और समाज और मोहल्ले लोकेलिटी में म्यूजियम की भावना कैसे विकसित करें। हमारे पास सामान है तो उसको हम कहीं इकट्ठा करें, म्यूजियम की तरफ डालें। हमारी स्कीम भी है भारत सरकार की, म्यूजियम ग्रांट फंड स्कीम, उसमें मुक्ता जी बैठी है, 80% मुक्ता जी दे देगी, 20% राज्य सरकार दे दो, और राज्य सरकार नहीं दे तो कोई एनजीओ से दे दो, एनजीओ नहीं दे तो कोई एमपी एमएलए को पकड़ दो, और मुक्ता जी 80% दे देगी। मैं कह रहा हूँ हम दे देंगे संस्कृति मंत्रालय से, बनाइए म्यूजियम। अक्सर हीरो की बात अभी जी किशन रेड्डी जी ने की, ये भी हमारा की टेक अवे हो सकता है। अब दुर्गा भाभी, कितना बड़ा नाम है दुर्गा भाभी का, दुर्गा भाभी में म्यूजियम का नहीं बने, जिन्होंने किस तरह से हमारे भगत सिंह जी की, सुखदेव जी की, राजगुरु की सेवा की। पूरा पैसा जो परिवार में मिला था, पिताजी ने कहा घर बना लेना, ये मैं पैसा दे रहा हूं, और दुर्गा भाभी ने मकान नहीं बनाया अपना। इन क्रांतिकारियों की सेवा की जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया, तो फांसी की सजा होगी। लोगों ने कहा अब तो उनको मकान नहीं देंगे, किराया कहां
मिलेगा, खाना कौन खिलेगा? वो दुर्गा भाभी आई, अपने पिताजी ने जो पैसा दिया उसके आधार पे और इनको सबको खाना खिलाया। ये दुर्गा भाभी नाम भगत सिंह ने दिया। भगत सिंह ने पूछा तुम कौन हो, पैसा कहां से ला रही हो? तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने। और 2047 तक भारत को कहां ले जाना है उसमें के लिए उन्होंने कहा विकसित भारत मानव केंद्रित। नंबर 1 गुलामी के सभी चिन्हों से मुक्ति। नंबर 2 विरासत पर गर्व। ये भी पंच प्राण है, तो विकास और विरासत साथ साथ चलेंगे। विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य, ये सब चीजें हम लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। एक हमारे, मैं तो खड़गांव जी को मैं जानता हूं, ये बैठे हैं, क्या जुनून इनके रहा होगा। बीकानेर रियासत जब देश आजाद नहीं हुआ था तो मुझे लगता है देश का प्रथम अभिलेख संग्रहालय बना होगा बीकानेर में। क्यों? और राजस्थान राज्य का अभिलेखागार देश का प्रथम डिजिटल अभिलेखागार आपने बना दिया। ये बड़ा काम किया इन्होंने। और मुझे लगता है 2 करोड़ ऐतिहासिक और प्रशासनिक अभिलेख डिजिटलाइज कर और साइट पर ऑनलाइन कर दी। हम भी देखते हैं कि औरंगजेब ने क्या पत्र लिखा था, हमारे महाराणा प्रताप कितने सूरवीर थे। ये सारी चीजें हम बीकानेर के आपके म्यूजियम में है। तो ये इस तरह का काम तो जुनूनी आदमी कर सकता, नहीं तो क्या करता है कोई आदमी। कई बार मैं देखता हूँ, अच्छा आप तो पुराने हो गए, अब तो म्यूजियम में रखने लायक। ये जो भावना समाज में आई है ना, इसको निकालिए। म्यूजियम हमारे विरासत है। कोई पुराना आदमी भी हो गया है, रिटायर्ड भी होने वाला है, तो वो म्यूजियम में रख रहा है, रखने की भावना जो रख रहा है ना, उसको कहो म्यूजियम भी हमारी विरासत है। जो देश के नागरिक अपने इतिहास में गर्व नहीं कर सकते, वो तरक्की भी नहीं कर सकते, हमारी संस्कृति में गर्व नहीं कर सकते, वो उन्नति भी नहीं कर सकते, हमारी सभ्यता में गर्व भी नहीं कर सकते, वो विकसित भारत को बनाने में योगदान भी नहीं दे सकते। इसलिए उनसे तो दूर हुई है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, उसके आधार पर हम म्यूजियम की भावना विकसित करने का काम समाज में करें। यही बात कहकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister, for your extremely notable address. May I now request you to initiate the dialogue with the other esteemed Honorable Ministers from the states. चलिए, जनता की तरफ से प्रश्न है आपका रोड मैप क्या है राजस्थान में म्यूजियम को डेवलपमेंट को लेकर के, और वर्चुअल वीविंग का कोई, जैसे वर्चुअली हम देखते हैं म्यूजियम को, ऐसा सकते हो क्या आप के बारे में अगर कोई 5 म्यूजियम को डिजिटल किया था, जिसमें अलवर है, भरतपुर है, 12 है और एक for documentation of ethnic music and dance. Thank you, sir. I represent the state of Ministerial, which happens to host the biggest cultural museum of indigenous people, which is the biggest for the entire northeast region. And this particular sector concentrates on the display of tools and artifacts of the people of northeast India. Sir, however, we are still, we have a very long way to go in terms of enhancing
enhancing our museums in terms of material collection and display, and this process is on. We would like to request and urge upon you that Meghalaya be also included for a cultural space in view of the fact that we are one of the few states which hosts the culture of the oldest indigenous population of this country, dating back to 1500 BC. Thank you. May I now request our Honourable Minister, Ms. Meenakshi Lekhi ji, to kindly initiate the dialogue with our respected Honourable Ministers. Thank you very much. May I request Father ji to go to the... Yes, please, go ahead. No, I would say, please. Thank you. In this tandem discussion with me on as Honorable Cabinet Minister J. Kishan Reddy ji, Shri Arjun Meghawal ji, Honorable Minister, Law and Culture, Madam Meenakshi Lekhi ji, MOS External Affairs and Culture, Shri Kesam Mohan ji from Assam, very old timer and good friend of mine, and also Madam Lakshmi Narayan, Minister Lakshmi Narayan, and Madam Chandrika from Puducherry, Madam Jayada met many times in Ahmedabad and other places in science technology conclaves. Madam Jayada Khanji, or BP Ringdo, Honorable Minister Culture and Tourism from Meghalaya, and dignitaries of the dais and senior officials of the Ministry of Culture. At the outset, I thank Ministry of Culture, Department of Culture for organizing such a systematic and comprehensive promotion in the field of literature, art and culture, and particularly with the intention to preserve the ancient cultural tradition, antiquities, science, technology, and other aspects. Here, I will just say, keeping in view the key aspects of national education policy, the science, technology, engineering, mathematics, STEM education. In this regard, Science Center, Museum, Planetariums, have an important role to play in helping and facilitating effectively implementation of new education policy, which is our Honorable Prime Minister Narendra Modi have been pursuing and also ensuring its success. And we in Odisha also, in line with that, we have taken the steps. And I must say that the government of Odisha has aligned with the new education policy, the only state who have come up with the plan to invest more than 500 crores to establish 6 more digital planetariums, science centers in all the 30 districts, and a modern science city near the state capital Bhubaneswar, innovation hubs in schools to begin with, in 50 schools, and roughly investing more than 250 crores, and also Satkosia Wildlife Sanctuary, which is dotting the Bay of Bengal, because as all of you know that we have in state of Odisha has 480 kilometers of sea coast, and Satkosia dotting that, and there is a need for maritime or aquatic museum, which will be much beneficial for the students, scientists, because we have one of the Satkosia Sanctuary and one of the large depository of the mangrove forest. And the massive plan of the state government Odisha under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Naveen Patnaik ji, we are focusing on the science, technology, engineering and mathematics education to develop
Constitution of India expects each citizen of this country to promote the scientific tempo. We also agree with that, and particularly developing the scientific tempo among the school teachers. I would draw the attention of the Madam Lekhi and also Kishan Reddy ji, Honorable Minister, that by end of this year, 12 mm dia, 8 digital planetarium, 6 digital science center will be dedicated particularly for the school children. And we are thankful to Indian Space Research Organization Ahmedabad. Recently they visited Odisha. They have a program called Space Employee, and the senior scientists from ISRO went there, displayed the exhibits, and there were interactive sessions along with students across state of Odisha, because we have smart classrooms, and we, through live streaming, the ISRO scientists went for the interactive sessions on Chandrayaan project of Prime Minister Narendra Modi ji. And Madam Lekhi has visited, as she was saying, the Kalabhumi project, which is in Bhubaneswar, Tech Capital, one of the very good museum, and she can put a word to that. I will not elaborate, I will not give my set, I will not eulogize my things. It's in my constituency also. And Gandhi Peace Center, the second one. And Aditya, with the help of Aditya Birla Foundation, and when I was Minister of Culture, we have built a Gandhi Peace Museum. Other of the nation built Odisha 8 times. So 6 galleries, beautifully done, all state of art, digitally, everything is equipped. And I also request anybody when visit Odisha, please visit that, Swacha Kalabhumi. Then we have a maritime museum at Cuttack, and since we have a coastline of 480 kilometers, we have a rich maritime past. We have a flourishing trade, so that Emperor Ashoka, who led the Kalinga War, wealth which our businessmen getting it from the Southeast Asia, Indonesia, Java, Sumatra and all this because of the maritime trade. So Kalinga War was one of the reasons why Emperor Ashoka went for that. And here I say that from the National Cultural Fund, I am drawing the attention of the Cabinet Minister Reddy. I have recently visited Port Aguda and beautifully done from National Cultural Fund. And I request you, sir, the 261 BC Kalinga War have linked with the history of India. Please do something from National Cultural Fund so that we have from violence to Dharmasha. And this part of India, we have a rich civilization, very ancient civilization, and we must protect that. I agree with you, and particularly the Bhitakanika, the sanctuary, as well as the Similpal biosphere, we need to focus in this case because it is so that it can attract the scientists and the researchers and the students. And I thank once again for giving me this opportunity to speak a few lines, and I hope this gathering, the luminaries present here will address the problems as we face today in preserving culture, monuments, as well as the pursuing scientific knowledge, innovations. I hope this will go in a long way. The discussion and the museum, the exhibit, all those will definitely help us pushing India, particularly in the 21st century, which all of us know is the age of information, will help realize the goal of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, my Chief Minister Naveen Patnaik ji. Thank you all once again. Bande Utkal Janai. Mr. Panda, I will request you to stay there. And my question to you would be, on behalf of the audience here, they've sent me a slip, and the slip says that, what's your vision for 2047? Because the vision of a state, especially a state like Odisha, Amrit Mahotsav's 100 years will get completed. What is the plan to reach up to 2047? Yes. The plan is
See, I don't want to paint a pessimistic past. I want to paint a viable, a vibrant picture of state of Odisha. See, we have rich mineral resources. In 2000, only state budget was 20,000 crore. Now, it is 2,30,000 crore. Chief Minister Naveen Patnaik has touched all sections of society, from poor to middle order, the middle class, and also beyond that. And imagine, with all the mission sector, the women empowerment, that is one of the factor, the health sector, and also education sector. You have made 5 T schools with all the e-laboratory, e-library, and smart classes, touching all aspects to making at least industry. We have already recently had the Odisha, 3rd edition of the Odisha investment programs, and the budget 2,30,000 crore this year have given focus all to develop, upgrade the knowledge base of our students, who will be the future citizen of India. Education is the key sector, industry is the other sector, and the mission sector, the empowerment of women, because late Biju Patnaik, legendary leader, made reservation 33% for women, and Naveen Patnaik has made it 50%. So bring the women folk of the state at par with the men, and in the national scenario they participate. So this is the vision for which our freedom fighters fought to have an independent India. We are definitely, my state is doing a lot to see that the economic self-reliance takes a full set 360 degrees. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. I mean, it's okay. I could ask one more question, which I thought, Odisha being a very rich state, cultural terms, what's the plan to have more professionals who are experts in culture preservation and crafts? I'm saying that, see, we have a rich cultural heritage, and particularly, the famous Jagannath temple at Puri. It is very much, it has a very good cultural background. In 12 months of a calendar, we have rituals which are linked to the day-to-day living of the people of the state. The rich temple, the heritage part, architecture, Konarak Sun Temple, all those, and Lingaraj Temple at Bhubaneswar, 11th century AD. The point is, we have taken care of not only the monuments, the ASI as well as the state archaeology have jointly undertaken many works in preservation, protection of the monument, because it is our heritage. But people, the artisans, the artists, those are linked with preserving the cultural part. Chief Minister has floated a scheme called Mukhyamantri Kalakar Sahayata Yojana, and 50,000 artists got the pension, 12,100 per month. This is his own flagship program. So, in different sectors of may it be sculpture, may it be painting, different aspects. So this is one. And protection and of the monuments. Because Bhubaneswar city itself called temple city. Hundreds of temples. And that is one. Second thing, I would request Honorable Minister Sri Reddy ji, please do something, because in 1857 CPI mutiny took place. But prior to that, in 1817, there was rebellion against the Britishers by the Pikers
Please, Indian Oil Foundation has taken up some work in Khurda district near the place where the rebellion took place. I request the earlier minister, Dharmendra Pradhan also has taken some steps. I request Lady Saab at least let the war be completed. So that will be a fitting tribute to the warriors, those who fought against the Britishers and we gained independence. Thank you. Thank you. Ma'am, Chandrika ma'am, you have a presentation? Puducherry, yeah? Please. Yeah, quickly. Happy afternoon to everyone. My great wishes to the Honorable Union Minister for Culture, Sri Kishan Reddy ji, and our Honorable Culture Minister. Congratulations, sir. Sorry, he is not here. Mekwal ji, and our Honorable Culture Minister Meenakshi Lekhi ji, and all other ministers, Hishab Mata, Azam, and Pal Lindo, Honorable Minister Meghalaya, and Ashok Chandra Pandey, Honorable Minister Odisha, and Zahita Khan, Rajasthan, Honorable Minister, and our very lovable Secretary, and other dignitaries present here. I feel immense pleasure to participate in this grand event of International Museum Expo 2023. Our state, Puducherry, the former French colony, has unique culture mix of ancient and modern. This culture significance attracts millions of tourists from all over the nation as well as foreign countries. Museum sustainability is vital for preserving culture heritage and promoting the well-being of the community. The government of Puducherry, headed by Honorable Chief Minister Sri N. Rangaswamy, is keen to work on museum sustainability in the coming year under Vision 2047. The Puducherry government would like to set up 2 museums with the administrative as well as financial support of Ministry of Culture, Government of India. The proposed museum will explore the urban planning and development of ancient culture of India and the South Indian civilization and Indo-French culture, and being established with the archaeological and findings preserved in Puducherry. In addition to the above, I am requesting the Honorable Union Minister to see for financial assistance for setting of the virtual museum at Puducherry, exploring the historical events from ancient to modern history of both Tamil Nadu and Puducherry to magnetize the young generation. Under the Vision 20, a site museum is also proposed to set up at Arikamedu. It is our old fort. It is an ancient, an eminent historical place having evidences of trade with Rome and industrial activities. Located in Puducherry, the UT of Puducherry is eager on culture development. In order to promote our activities, I once again request the Honorable Union Culture Minister to extend his kind support, which means financial support. Thank you. Nanji Vanakkam, and our Tourism Minister is here. He will explain everything. Honorable Union Ministers, the dais and the Honorable Ministers from various states. I want to add just few things to our Honorable Minister's presentation about Puducherry. You know well, the Puducherry is very, Indo-French culture. We are going to maintain this Indo-French culture as our basic USP for Puducherry tourism and also preserving culture. And the Puducherry government has also listed 100+
heritage buildings, and in 2047 we will be preserving and conserving these government buildings as heritage sites. And as our Honorable Minister said about the Arikemedu, we request the Minister to expedite the excavation that is pending for our Arikemedu project, so that once it is excavated, it will be equalized to Tamil Nadu, Keeladi, and more than 3,000 years old culture we can establish in Puducherry. And apart from that, we still maintain the Kiyur referendum that has been conducted as a museum site now, because that Kiyur referendum was the result for our merger with our Indian government. So these are the sites that we are retaining it, and you know well that Puducherry is a 4 regional spots. All these 4 regions we maintain. In all the 4 regions we have a lot of heritage sites. The streetscape we are maintaining it. Puducherry, more than a museum, Puducherry itself a museum to be explored for years together. Our cultural and the historic sites, all right. These are all the our USPs. And we are also we are just discussing with the French government museum to establish a digital museum with the lot of artifacts and lot of documents that are with the French government in the Louvre Museum. That we are discussing with them to get all the copies of the historical documents available in Paris, so that if it is fair to us, then we can establish a good French museum in Puducherry. So these are our visions, just to add to our Honorable Minister for Culture. Thank you, Minister. Lakshmi Narayanji, stay put. One question to you on behalf of the audience, yes, ma'am. And that is, what is the status and what do you plan to improve that of the conservators, preservers, manpower management which you require for doing this nature of work? And especially when you say have the excavation done, etc., etc. But Pondicherry or Puducherry itself has a university, and does it have an archaeological department? Yes, madam. Yes, madam. It has. Madam. We have to establish, because the Puducherry, it's a new territory. If you want to establish a separate department, we need to have our assistance, Government of India's Home Ministry's permission to establish a new department also. Now we know well it is Puducherry is very small. We have just 30 to 40 departments only. All these are under the Culture Minister's department, is coming under the Culture Department. We have to expand our Culture Department, because we need to establish a curator, we need to appoint archaeological assistants. So there is a lot of archaeological sites. At a university level, yes, this will be part of History Department. Yes, madam. But if you bring it under the skill training, which is the state's prerogative, yes, you can set up 6 months, 9 months, 1 year kind of diploma courses for the conservators and the preservators. Okay, madam, we'll take it. I'm just hinting out because I've visited Arikemedu, yes, madam, and I know, and also the second thing, preserving and conserving that area, because a lot of microbeads are getting stolen from that region. Yes, So, yes, a lot of people are having private collections also. As you madam knows well, a lot of people have collected a lot of artifacts, and they are having the private property now. And the lot of the history departments of our college and the universities also taking a lot of seminars, symposiums they are conducting already. So there are a lot of things are going on. A lot of 2-3 important professors of our government, they are taking much interest about the Arikemedu collections also. They are also doing a lot of symposiums and seminars on this Arikemedu. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Thank you to all our honorable ministers who have joined us today for sharing their experiences, perspectives and the road ahead for museums in their respective states. Before we finally come to an end of this session, we would like to present mementos to our esteemed guests on the dais. So may I firstly request Honorable Minister Shri G. Kishan Reddy Ji to please do the honors in presenting the mementos. Firstly, to Honorable Minister from Assam, Shri Keshav Ji. Sir, may I request you to present him a memento. And also to our two ministers from Puducherry, to Madam Chandira Pragya and Shri K. Lakshmi Narayan. And I'll request Ms. Meenakshi Lekhi, Madam Honorable Minister, to do present it to Shri Ashok Chandra Panda, from the Honorable Minister from the state of Odisha, Shri Paul Lindo from Meghalaya, and Zaida Khan from Rajasthan. And I'll request Ms. Mugdha Sinha, JS Madam, to kindly present the mementos to Honorable Minister Shri G. Kishan Reddy and to Ms. Meenakshi Lekhi, Honorable Minister. And now may I request Ms. Mugdha Sinha, JS, to kindly propose a vote of thanks. Namaskar and a very good afternoon. Honorable Union Minister for Culture, Tourism, Donair, Garu, Shri G. Krishna Reddy Ji, Honorable Minister of State for Culture and External Affairs, Srimati Meenakshi Lekhi Ma'am, Honorable Minister for State for Culture and now also Law and Justice, Honorable Shri Arjun Ram Meghwal Ji, and all our very, very esteemed guests and ministers from the state, culture and science and technology, from the states of Assam, Orissa, Rajasthan, Nagaland, and the two honorable ministers from Puducherry. To all our very, very esteemed audiences, to all our partners, I'm extremely grateful to be able to host all of you, all our very, very esteemed panelists and the delegation that is traveling from all the states who are here, to all our foreign dignitaries who have come here today. It is an honor to host you at the International Museum Expo, the first of its kind that is being hosted by the Ministry of Culture, Government of India. It is very gracious of our Honorable Minister to spend almost 2 hours with all our state ministers to discuss the Vision 2047 as far as the museums and development of museums and cultural spaces in the country go. It is very important for all of us in the center, in the state, down to the village and the community levels, also down to the individual people who hold a lot of private collections. And as the Honorable Prime Minister said yesterday, that each of us is a museum of memories, our households, our museum of collection of our ancestors, which can be used to keep alive the memory and the history of humanity for the future of the progeny. So we had a very, very fruitful discussion today, a very, very collaborative engagement. I think the idea of this session basically was to take this collaboration between the center and the state, because both are schemes for development of museums, the Museum Grant Scheme and the SPOC scheme for promotion of the culture of science are a collaborative scheme where we work in partnership with the states. And as the Joint Secretary, I heard all the ministers, we'll be very, very happy to collaborate. I also thank our Honorable Minister for State, both the Minister for State, for sparing so much of their valuable time. And I'm extremely beholden to all ministers of the state who have come down from different parts of the country for gracing this occasion. And I will now request all our ministers, there is a guided tour
of all the components of the exhibition for all the honorable ministers. I will accompany you all, and after that I am requesting all of you for a sit-down gastronomical lunch which has been prepared specially for this exhibition, for this expo, and it is based on your humor and constitution. So whether you are a tough person, you are a wit person or a bit person, served right from the roof to every served based on your humor and your constitution. Please do take out time to stay for the lunch. This will be a very, very engaging, and we will also get to discuss the suggestions that you made here. So thank you once again. Thank you very much for sparing so much of your valuable time, for all the suggestions that have flowed through. All my team is here. We've made notes of the suggestion and we try and work in collaboration and take it forward. To all the lovely audiences who have been here with us for the last 2 hours, to all our partners from the state who have signed the MOUs with us, this is only the beginning. We have a lot of work to do. So thank you very much to all the media people and to all the audiences and spectators who have come to this hall and are visiting the expo, to all the school children and to all the schools and teachers. I extend a very, very warm thank you and gratitude for making this a success, because the success of any event is basically dependent on the stakeholders who come here. So once again, can we give all our honorable ministers who are on the stage and dignitaries a very big round